Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience with us. And if you're preparing for any competitive examinations after your law, like SEBI Grade A Legal Officer exam, RBI Grade B Legal Officer, IBPS SO Law Officer, IBPS RRB, then you're at the right place. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Legal Bee. कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. चेक आउट आवर ऑनलाइन कोर्सेज with demo available on www.iexamby.com. Download our app for 50% faster job preparation. I have started a video series for descriptive answer writing. This is very beneficial as in each video I am discussing a separate topic and also I am providing you a sample answer of around 250 to 300 words. If you have any queries, you can reach out to me in the comment section of the video as well. Download these PPTs, practice these question and answers, and this will definitely help you. Practicing descriptive answers is the key. इस वीडियो सीरीज को मैंने काफ़ी दिन पहले स्टार्ट किया है. 15 पार्ट्स मैंने पहले अपलोड किए थे. नाउ आई हैव ऑल्सो अपलोडेड 16th and this is the 17th part of my video today. The question is, what is plea bargaining? This is a concept from criminal law. Introduction. Word plea generally means an appeal, prayer, formal statement by the defendant, and word bargaining generally means negotiation or settlement, and hence the meaning of the word plea bargaining can be summed up as an appeal or a formal statement by the accused for negotiation with the prosecution. Meaning CRPC section 265A, BNSS section 289. I have provided you both the sections for your reference here. A plea bargain is basically an agreement between defense and prosecution. It's like a negotiation between prosecution and defense, जो कि guilt से related होता है. If the accused pleads guilty to criminal charges or pays compensation in exchange, prosecution drops some charges or makes some recommendation to the judge to enter a specific sentence which is acceptable to the defense. This concept is added in Indian Criminal Procedure Code basically by way of amendment in 2003. Now it has been carried forward in BNSS as well. Types of plea bargaining are three basically: charge bargain, sentence bargain, and fact bargain. Charge bargain is basically talking about accused pleading guilty for lesser charge, but यहाँ पे charge change हो रहा है. For example, pleading for manslaughter for dropping the charges of murder. मैनस्लॉटर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली अभी हम कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड. सेंटेंस बार्गेन, अक्यूज बार्गेन्स फॉर अ लेसर सेंटेंस, रिड्यूसिंग जेल सेंटेंस और फाइन एसोसिएटेड विद द क्राइम. सेंटेंस बार्गेन इज व्हाट इज प्रेवलेंट इन इंडिया. फैक्ट बार्गेन, अक्यूज एडमिट्स टू सर्टेन फैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अदर इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू एविडेंस. ये भी इंडिया में इन्फोर्सिबल नहीं है. चार्ज बार्गेन भी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं है. We only practice sentence bargaining. So what is the criteria for plea bargaining? If the accused has committed an offense which is not punishable with life imprisonment or imprisonment for more than 7 years or death, then only it can go for plea bargaining. अगर उसमें imprisonment 7 साल से ज़्यादा है, life है या death है, तो plea bargaining के लिए the accused is not eligible only. And the offense should also not be socio-economic in nature. It should not be committed against a child or a woman. ये सारे क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही अक्यूज प्ली बार्गेनिंग के लिए जा सकता है. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये मेंशन करना आपके आंसर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर एक्सप्लेनिंग मीनिंग, टाइप्स एंड द क्राइटेरियन, we can conclude that plea bargaining is a Western concept. In CRPC as well as BNSS also, if we talk about, rather in BNSS it has become more limited in nature. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा दैट ओनली सेंटेंस बार्गेनिंग इज कवर्ड, ये BNSS में भी फाइंड आउट किया गया है. एंड रादर दे हैव एडेड अ स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑल्सो इन BNSS that the plea bargaining will be completed, the application for plea bargaining has to be filed within 30 days from the date of framing of charge. So this can limit the scope further. यानी कि अगर 30 days के हमने लिमिटेशन पीरियड उसके लिए डाल दी है तो इसको और लिमिट हो जाएगी इसकी स्कोप और ज़्यादा, ऐसा माना जा रहा है. एंड एक्चुअली वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वेलकम्ड कंसेप्ट नहीं है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. सो उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है BNSS में. सो अब ये सब आपके वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है. ये टॉपिक तो काफ़ी
आप एलेबोरेट और कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स पे. यू हैव टू स्टिक टू द नंबर ऑफ वर्ड्स, बी विद इन योर वर्ड लिमिट एंड ट्राई टू introduce the most important concepts first in your answer. Have a balanced answer. I have introduction and conclusion, and in between go to the point first in short limit word answers like these. So this is all. If you have any queries, you can reach out to me. Write to me in the comment section of this video as well. Prepare 50% faster with us at iExamBee. Download our app from the Google Play Store. Check out the full course access available on iExamBee's website, on iExamBee's mobile app as well. And app में आप offline access भी check कर सकते हैं. Live classes, daily quizzes, daily current affairs, everything is available even on our app. Prepare 50% faster. Thank you everybody.